Okay, so let's start with the today's session. We have seen about convolution, like what is the meaning of convolution in the previous session, if you remember. And this is what we have derived, if you try to recall. Can you help me out, sir, what you have derived in the previous session? Y of t is equal to, yes, x of tau, x of tau dot h of t minus of tau integration of reference to d tau, and this integration will be running from t equal to minus of infinitive to plus infinitive. Do you all agree to this? Yes or no? Yes. Okay. So in this case, if you try to look out, like I have certain things. The first, what you have is a multiplication sign involved. So first, what you have is the multiplication sign is involved in this case. Second sign is integration. Integration is basically addition is involved. You have an addition involved in this case. Okay. Third case, what you have involved is the shifting t minus tau. The shifting operation is happening in this case. The first you have is the shifting operation in this case. Fine. Now, if I ask you, example, like Shrutiman, can you help me 3 multiplication by 3 into? Can you perform what is 3 into? Can you do this? Yes, sir. No, it is not possible. Why? Because you say 3 into what? You require another number. Yes or Yes. no? You require another number to say okay, what is 3 into what? What do you mean to say? You require another number. I can say in order to perform multiplication, you require operands. So multiplication is binary operator. Similarly, if I ask you, Rahul, I wanted to perform 4 plus. Can you perform 4 plus? 4 plus what? Is it possible to perform 4 plus? He will say no. I require one more operator. I require one more operator. So I can say addition is also a binary operation. Addition also is binary. What about shifting, sir? What about shifting? So shifting me you require only one operand. Example x of t, h of tau, whatever it is. So shifting is a unary operator. यूनरी ऑपरेटर तो पहले डिसाइड कर दे कि मैं एच हूं और मैं करने वाला हूं शिफ्टिंग पहले डिसाइड हो गया है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एच के साथ भी होगा कि एक्स को लेना है कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है ये क्लियर हो गया फाइन नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूं y of t like after doing convolution I'll be getting answer in this form x of t and h of t so I need to put some sign some notation yes or no how can you do how can I write the notation sir so what is multiplication how do you write multiplication in the conventional manner in your notebook so you say I write multiplication by means of a cross how do you write addition sir I write addition by putting a plus sign fine but if you try to check out like I am having multiplication I'm having addition and what about shifting sir is there any sign for shifting do you write any sign any notation for shifting operation no we directly write over like h of t minus k like minus because it indicates delay if it is plus it indicates advance we don't have a sign we only sign of multiplication and we have only sign for addition so since this operation involve three things together overlapping यहाँ पे मतलब ये भी है ये भी ये भी है so the final notation can be of this kind. The final notation will be of this kind. The final notation will be of this kind. So I'll be writing the final notation will be for this. This is my final notation. Understood how do I write final notation? This star over here in between indicates convolution. And convolution involve multiplication, addition, and shifting. Okay, understood, sir? What is convolution? That's what you understood, sir. Okay. Now, this is the first thing which I want you to aware of. You should know. Like whenever a question of convolution comes into consideration, you must have. Matlab, examiner must give you two signal, x of t and h of t. You must have both the signal. Now, आपको एग्जामिनर जो है वो क्या देने वाले सर मैंने क्या बोला कैन यू रिपीट द स्टेटमेंट फॉर मी सर एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू टू थिंग्स व्हाट सर द फर्स्ट थिंग x of t what is x of t x of t is any random signal x of t is any random signal okay what is h of t sir h of t is the impulse response h of t is the impulse response I can say h of t is the impulse response of a system
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स? मतलब कोई भी अगर सिस्टम है उसको अगर मैंने इम्पल्स इनपुट प्रोवाइड किया डेल्टा टी, so output will be obviously h of t, and delta t is the impulse input and h of t is the impulse response. Understood, sir? Okay. Now examiner has given me both the things, x of t and h of t, and then using this I'll be performing this complicated operation. I'll be performing this cumbersome, this particular troublesome, this wala operation, which is very difficult to perform. Okay. Why difficult to perform? Why I'm saying it is complicated, why it is time consuming, why it is laborious? The reason because it is involving multiplication, addition, and shifting in one single operation. It is complicated to perform. Okay, now moving ahead, sir. Understand second point. What is critical points? What is the meaning of critical point? Understand this. What is the meaning of critical points? Number one, if I draw a signal for you, let me draw a signal for you. If I draw a signal like this, if I draw a signal, example, मैं एक signal draw करके दिखाता हूँ आपको. Like I have a signal like this. This is my x-axis, okay? X-axis, fine. And now I want you to show you the signal, how this signal will look like. So this is x and this is y. This is the first signal, okay? This is the second signal, fine. Second signal is there, and this is the third signal, fine. This is the third signal. What can you say for this, sir? You will be saying, sir, this is like a rectangular pulse. This is a sinusoidal signal, and here you can say, okay, like this is e raised to t, because it is exponential rise. And if I talk about this, it is exponential decay in this happening. It is exponential decay. It is exponential rise, exponential decay. Okay, like it is a two-sided function, two-sided exponential function. It is exponential two-sided. The exponential rise is there and exponential decay is there. So that means you have understood this point. Okay, now just try to focus over here, sir. You call this as point A, and you call this point B. You call this point A, you call it as point B, you call it as point you call it as 0. What is critical point? You tell me, sir, here. What about this? All are 0, 0, 0, 0. Only at this point there is a transition. Fine. There is a transition is happening at this point. So I can say my point A and point B are the what, sir? They are the critical point. Is this a critical point? Can I say this is a critical point? No. Why? Because इसके पहले इसके बाद में भी वही है. So I will not say that this is my critical point. Okay. What about this? Is my A a critical point? Yes. Is my B a critical point? Yes. Because इसके पहले 0 है, इसके बाद में भी 0 है, और मेरा जो sinusoidal waveform है वो सिर्फ ये ड्यूरेशन में अवेलेबल है. और क्या मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट बोल सकता हूं? नहीं सर, बिकॉज यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे इट इज व्हाट, इट इज 0, बट इसके पहले भी साइन, इसके बाद में भी साइन है. सर नाउ व्हाट कैन आई से दिस 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ओवर हियर? यस और नो? यस. व्हाई? बिकॉज इसके पहले एक्सपोनेंशियल राइज है और इसके बाद में एक्सपोनेंशियल डीके है. So you should know what is the meaning of critical point. Okay, fine. So you should be able to identify the critical points. Fine. So now let's come to our very first question, which may come for 10 marks in the examination. देखो सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये मैंने आपके साथ में एक शेयर किया है मैंने कल या रात को. Continuous time convolution. How the question comes in the exam? Perform the convolution operation. क्या बोलता है वो? परफॉर्म दी कन्वोल्यूशन ऑपरेशन. क्या करना है मुझे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. मुझे यहाँ पे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. वांट टू परफॉर्म कन्वोल्यूशन ऑपरेशन बिटवीन टू फंक्शंस. दो फंक्शन मुझे दिया गया है, बिकॉज इट हैज टू गिव मी टू फंक्शन इन टाइम डोमेन मुझे करना है. ठीक है, ओके. नाउ अब ये कन्वोल्यूशन करने के दो तरीका है. तरीका नंबर 1 कौन सा है सर? ग्राफिकल मेथड है. ग्राफिकल मेथड यहाँ पे लिखा गया, ग्राफिकल मेथड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ग्राफिकल मेथड. एंड अनदर मेथड इज व्हाट सर? एनालिटिकल मेथड. एक ग्राफिकल मेथड, एक एनालिटिकल मेथड. दोनों मेथड को हम देखने वाले. पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहने की कोशिश करता है यहाँ पे. ओके, नाउ जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. पहला मुझे इसने बोला कि पहला जो फंक्शन है x1 of t इज u of t, and
x2 of t is e raised to minus t for t greater than equal to 0। तो मैं काम करता हूं भाई, ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूं। I just write over here कि x1 of t for me is currently what sir, u of t, and second time it is e raised to minus t। तो x of t को उसने मुझे क्या बोला है, वो मुझे बोलता है x of t is u of t in this example if you try to check out, and second time it is e raised to minus t, e raised to minus t only for t greater than equal to 0। मतलब यहाँ पे कौन किसकी बात कर रहे हैं, it is talking about what, it is talking about the one sided, it is only one side, और सिग्नल आपका सिर्फ राइट साइड में ही मौजूद होगा और आपका ये वाले की बात कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ you have your x of t as u of t and you have h of t as e raised to minus t। Have you understood sir what I'm trying to say? Okay, so x of t and x, यहाँ पे उसने x1 x2 बोला है, लेकिन मैंने कन्वोल्यूशन के लिए इसको मैंने काय में कन्वर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ x and h। ओके फाइन, x and h इसको मैं ले सकता हूँ, इसको मैं x and h करके। ओके नाउ अभी सुनिए सर, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ convolution operation is commutative in nature। what is the meaning of commutative? commutative का मतलब ये होता है कि आप जो है वो x of star ht करिए, जैसे यहां पे मैंने लिखा है, या फिर h of t star x of t करिए, both will fetch you same answer। why it is so? multiplication, what is multiplication? 2 3s are 6, 3 2s are 6, addition 2 plus 3 5, 3 plus 2 5, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग में पहले बोल दिया है ना कि भाई मैं करने वाला हूं, ठीक है। आप शिफ्टिंग इसके साथ में करिए या फिर शिफ्टिंग आप एक्स के साथ में करिए, फाइन। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, शिफ्टिंग पहले से प्री डिसाइड किया गया है। अच्छा ये हमको समझ गए यहाँ पे। नाउ अब समझो, मैं अगर लेता हूं x of t as u of t and h of t is e raised to minus t, यहां पे इसने कैसे लिया है, h of t को u of t लिया है और x of t को उसने e raised to minus t u of t लिया है, ठीक है। e raised to minus t u of t, fine। okay, now just try to understand this। what is x of t sir? u of t, मतलब ये ऐसा दिखेगा आपको। what is e raised to minus t? तब ये आपको ऐसे कुछ देने वाला है, एक्सपोनेंशियल डीके, फाइन। सो नाउ यू कैन टेक इधर दिस वाला as x of t or you can take either this one as h of t, both will fetch you same answer। so for example let's try and trace progress with the way it is taken। मतलब उसने u of t को h of t बोला है, उसने u of t को h of t बोला है, तो इसने बोला कि भाई मैं इसको u of t बोलता हूं, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको बोलते हैं कि now this will be our u of t। ओके u of t अपना ये वाला था और ये हमारा था e raised to minus t, and now I say कि now this will be my h of t and this will be our this thing। जब मैं इसको ये ले लेता हूं ये h of t और मैं इसको बोलता हूं कि ये हमारा ये वाला पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग सर व्हाट आई हैव डन सर? इट इज सेम, आप ऐसा लो या वैसा। लेट्स स्टिक टू द नोट्स फर्स्ट एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू शोकेस इन दिस केस। नाउ so x1 of t is h of t u of t, x2 of t is x of t equal to x of t को उसने e raised to minus t बोला, x e raised to minus t, and since it is one sided so I'll be using like e dot e u of t। what is u of t? because u of t से अगर मैं multiply करता हूं e raised to minus, because what is the graph of e raised to minus t? the graph will be like this, yes, because it is exponential decay। बट मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे ये पार्ट तो चाहिए नहीं, मुझे तो क्या करना पड़ेगा, आई विल मल्टीप्लाई विद दिस बिकॉज दिस पार्ट विल बी जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड विल बी दिस, विल गिव मी दिस एज एन आंसर। अंडरस्टूड सर व्हाट आई हैव डन, व्हाई आई एम टेकिंग u of t मल्टीप्लिकेशन साइन? ओके फाइन। सो नाउ आफ्टर यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, अब सुनिए सर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे टाउ बोलता है वो, इधर भी वो टाउ बोलता है। कहने का मतलब ये है कि इन दिस एक्सप्रेशन इफ यू हैव अ लुक, दिस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन सा है सर? दैट वेरिएबल इज टाउ, दैट वेरिएबल इज टाउ, दैट वेरिएबल इज टाउ, दैट वेरिएबल इज टाउ। सो व्हाट इज टी सर? सर टी इज अ कांस्टेंट, t is a constant, okay, t is a constant। so this gives me implication that I need to convert my both the signal ka variable with tau। so what I'll be doing here, so I'll be writing here as okay, now my x of t which was initially equal to e raised to minus t dot ut, अब इसको मैं लिखने वाला हूं by change of variable, I'll be writing as x of tau
dot e raised to minus of tau dot u of tau. समझे सर क्या क्या मैंने यहाँ पे सिंपली चेंज ऑफ वेरिएबल, जहां जहां टी वहां वहां टाउ। ओके, उसी प्रकार से आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एच ऑफ टी विच इज इक्वल टू यू ऑफ टी बाय यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल आई विल बी राइटिंग एज एच ऑफ टाउ इक्वल टू यू ऑफ टाउ। ओके, अंडरस्टूड सर? यस। लेकिन बच्चा सुनिए ध्यान से, अभी स्टोरी यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे एक्स ऑफ टाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे लिखा गया एच ऑफ टी माइनस टाउ। एच ऑफ टी माइनस टाउ क्या होता है? कैन यू हेल्प मी सर, व्हाट इज एच ऑफ टी माइनस टाउ? So I'll be simply writing here as therefore h of t minus tau is equal to u of t minus of tau. समझा आपको सर? ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्वोल्यूशन, बट if you follow the proper algorithm, if you follow the proper flow, then things will become easy for understanding. That is I'm going case. Okay, now अब सर आप इसको now you ignore this, now you can, because ये तो स्टोरी खत्म हो गई, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं, आप यहाँ पे था एक और। अभी ये क्या है, what is the meaning of ut minus tau? Don't forget, now your tau is the variable and t is the constant. Don't confuse sir. तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा था आपको कि now it is basically u of minus tau plus t. What will be the answer sir? What is the meaning of this? इट इज लाइक व्हाट माइंड, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर, जिस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल लाइक आई हैव u ऑफ माइनस टी प्लस टू फॉर एग्जांपल, तो व्हाट, हाउ विल यू डू दिस? माइनस टी प्लस टू कैसे करोगे इसको? माइनस टी प्लस टू, काइंडली पे अटेंशन, थोड़ा डिफिकल्ट है ये पॉइंट है, कैसे करोगे इसको? हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं पहले। Okay, so if I want to follow English method, so I need to do that भयानक वाला step in between, तो e minus of t minus 2 है ना, ऐसा होने वाला है। Yes, do you agree to this? लेकिन अगर मैं उर्दू मेथड फॉलो करूंगा तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा प्लस टू एंड माइनस। ओके, so for example let's start with English method just for the sake of understanding, like आप उर्दू मेथड से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइन। तो एग्जाम्पल समझो, अगर ये स्टेप मैं परफॉर्म करता हूं तो ये स्टेप में क्या हो जाएगा सर? ये आपका सिग्नल था बेसिकली, दिस वाज योर ओरिजिनल सिग्नल। यस, कौन सा था सर ये? u ऑफ t। अभी आपने क्या बोला? माइनस, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? रिवर्सल करना पड़ेगा। तो रिवर्सल करोगे तो क्या हो जाएगा? तो दिस सिग्नल नाउ विल कम बिकम विल लाइक दिस, तो इसको बोलेंगे सर नाउ दिस इज माय u ऑफ माइनस t। यस, डन। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग सर? माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पे है माइनस ऑफ 2, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस 2, मतलब ये अभी इधर आ जाएगा। तो नाउ माय न्यू सिग्नल विल लुक समथिंग ऑफ दिस काइंड, फाइन। ओके, नाउ माय न्यू सिग्नल विल बिकम समथिंग ऑफ दिस काइंड, मतलब जो जीरो था अब वो प्लस 2 पे आने वाला है, मतलब ये अभी ऐसे कुछ दिखेगा आपको। डू यू अग्री टू दिस? नाउ दिस इज माय u ऑफ माइनस t प्लस 2, फाइन। नाउ सर अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, नाउ चेंज ऑफ वेरिएबल, नाउ माय t, ये वाला t is actually tau, yes, and this t is basically 2, so I can write like this minus tau plus t। समझा सर क्या क्या मैंने? कंफ्यूजन नहीं ना? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि सर क्या चल रहा है, नहीं समझ रहा है? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई डिड? यस सर। वेरिएबल टाउ है एंड वो शिफ्टिंग फैक्टर t से हो रहा है। ओके ओके, कंफ्यूज मत करिए सर अपने आप को, थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। आई एम गिविंग यू ऑलरेडी, क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू यू, थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, फाइन। ओके, टाउ था, टाउ कर दिया, टी ए, मैंने आपको ये सिंपल था समझने के लिए, पहले ये आपको समझा फिर कैसे क्या ये। इफ यू वांट यू कैन गो विद उर्दू मेथड, उर्दू मेथड भी आपको यहां तक लाके पहुंचाने वाला है आपको। ओके ओके, सो दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब मैं क्या करने वाला हूं, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कराया। नाउ ये टी जो आपको जो दिख रहा है सर, अब नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस टी। अभी पूरा खेल जो है आपका, पूरा जो गेम है वो टी पे चलने वाला है, मतलब टी जो है वो अलग अलग वैल्यूज लेने वाला है। इफ टी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इफ टी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 एंड सो ऑन, मतलब ऐसा कुछ हम करने वाले। अभी कैसे क्या करना है इसको, कैसे कैसे टी वैल्यू अलग वैल्यूज लेने वाला है, ये पूरा डिपेंड करेगा आपका क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। अब तक कोई कंफ्यूजन?
टी अलग अलग वैल्यू लेगा। कैसा वैल्यू लेगा? दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन whom? दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन क्रिटिकल पॉइंट। ओके फाइन, so that will be dependent on critical point. Fine. Yes, sir. Okay, chalo, let's start, sir. Sorry for interruption. Fine. So this what we were discussing. अभी क्या करने का, सुनो ध्यान से। कंफ्यूजन इधर हो गया, ये है और ये है। सिंपल कौन सा लगा आपको दोनों में से? आउट ऑफ दिस टू सिग्नल, विच सिग्नल यू लाइक द सिंपलर? सिंपल कौन सा, इजी कौन सा दिखने के लिए? फास्ट गाइस, प्लीज बी फास्ट। हेलो, इज योर वॉइस ऑडिबल? करेक्ट है, हाँ, प्लीज बी फास्ट गाइस। तो आपने बोला सर सिंपल जो ये है, ये सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हाँ पता है, लाइक ये भी मालूम, बट थोड़ा ये डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिवली। फाइन, आई होप यू ऑल अग्री टू दिस। नाउ अभी आप यहां पर आइए। अभी आपको मैं थोड़ा चीजें थोड़ा मैं डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई बुक में लिखा नहीं गया है, बट यू शुड नो दिस थिंग्स, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने एक्सप्रेशन देखा, मैंने आपको बोला कि आप x ऑफ टी इसको भी बोल सकते हो, x ऑफ टी इसको भी बोल सकते हो। अगर इसको बोले तो ये ऑटोमेटिकल एज बन जाएगा, इसको तो नीचे वाला ऑटोमेटिकल एज बन जाएगा। मतलब आप किसको भी x इसको भी एज बना सकते हो। आप इसको x बोलो तो ये एज बन जाएगा, इसको h बोलोगे तो ये x बन जाएगा। अगर ये सिंपल है, ये सिंपल है, तो जो सिंपल है उसको x h बना देने का। जो सिंपल है उसको एच बनाने का। क्यों ऐसा? क्योंकि एच में मगजमारी है, एच में प्रॉब्लम है। आपको एच में ये सब कारनामा करना पड़ता है आपको। तो अगर सिंपल है और सिंपल चीज के साथ में कारनामा करने को बोला तो लाइफ थोड़ा इजी होता है। अंडरस्टैंडिंग सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर ये होता, इसके साथ में अगर कारनामा करना पड़ता तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती। आ गया होता बट लिटिल बिट टाइम कंजम्पशन आपका बढ़ जाता। दैट इज द रीजन आई प्रिफर्ड गोइंग अहेड विद दिस एज द h of t and I went ahead this as x of t. ऑब्वियसली ये h है तो ये x of t तो बनना ही है। समझा आपको सर शॉर्टकट? ये आपको मैंने एक छोटा सा टॉप सीक्रेट हैक आपको मैंने बता दिया है। ओके चलो, अंडरस्टूड सर। नाउ अब हम कैसे करने वाले हैं? अभी आप देखिए सर मैं क्या करने वाला हूं, क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन इसलिए हम लोग समझ रहे हैं प्यार से, बाद में फिर हम लोग फटाफट चीजें खत्म करने वाले हैं। तो नाउ आई हैव दिस एज माय e raised to minus t dot u of t. What is this, sir? This is my original signal and this is my second signal. What is that, sir? सेकेंड सिग्नल जो है मेरा ऐसा था। अब इसके साथ में जब मैंने कारनामा किया, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, जब मैंने कारनामा किया तो मुझे ऐसे कुछ देखने को मिला है, t. Fine, I hope you all agree to this. And this is my x of tau. Oh, tau. Sir, this is my h of t minus tau. Yes, I hope you all agree to this. Okay, yes. अब मुझे बताओ सर, स्टोरी ध्यान से सुनिए सर तो समझेगा पूरा स्टोरी क्या होने वाला है। अगर मैं बोलता हूं कि माई t इज नाउ लेस देन 0, नाउ t वैल्यू इज लेस देन 0, तो किधर आएगा फिर ये ग्राफ? कहां आएगा सर? इफ t इज लेस देन 0, वेयर द ग्राफ विल बी? कैन यू टेल मी बेटा, वेयर द ग्राफ विल बी? किधर आएगा ये? सेकंड इधर क्वाड्रेंट। ये देख रही, ये ऐसा हो जाएगा ये। फाइन, दिस विल कम लाइक दिस। Yes, ओके, sir. मतलब शिफ्टिंग हाँ कर दिया सर। मैंने। नाउ इफ यू ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस ग्राफ, आई मीन मल्टीप्लीकेशन मतलब कौन सा ग्राफ सर? ये ऊपर वाला, ये लालू और ये हरा वाला, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट विल बी द आंसर?
what will be the answer, sir? What will be जीरो the होगा। answer? Zero. Very good, बेटा, बहुत सही बोला आपने. The answer will be zero. Fine. If I take t greater than zero, second case, t greater than zero, then what will happen? If t greater than zero, then where it will be? Then where it जीरो will से be? टी तक एक्स ऑफ टाउ दिखेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही बोला आपने. आप बोलते हो कि सर देखो अभी क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल समझो ये भाई साहब को अगर मैं उठा के मैं अगर ऊपर लेके चलता हूं, देखिए सर मैं क्या करने वाला. जस्ट इट इज वेरी गुड के दिस माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड इज हैविंग इट फीचर टू ड्रैग एंड ड्रॉप, सो यू अंडरस्टैंड मोर बेटर वे. अब इसको अगर मैं यहां रखता हूं, यहां देखिए, समझ रहे क्या कर रहा हूं सर मैं? ए भाई तो क्यों गोलमोल हो गया. ठीक है, इसको यहां लेकर आया मैं. फाइन. ओके, सो कैन आई से नाउ आई इफ आई ट्राई टू डू दिस, व्हाट डू आई हैव? दिस एंड दिस पोर्शन, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन होगा, ये वाले रीजन की बात होने वाली है. अग्रीड? व्हाई? बिकॉज दिस इज वन, this is one, unit step signal is one. Okay, so if now if I try to perform the multiplication, what will be the answer? तो चलो भाई अब हम यहां पे आते हैं. तो as rightly pronounced by our intelligent CR, okay, the value is only from 0 to 2, 0 to t, sorry, 0 to t. Yes, so now my integration का limit will be from t equal to 0 टू टी इक्वल टू टी. समझा सर क्यों आया इंटीग्रेशन का साइन ऐसा? बिकॉज यहां पर जीरो है, यहां पर भी जीरो है, तो पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी लेकर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, मुझे जीरो से टी ही लेना पड़ेगा. ओके सर, नेक्स्ट व्हाट यू हैव? एक्स ऑफ टाउ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टाउ सर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टाउ? फास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टाउ? बोलिए सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ ई टाउ? रेज टू माइनस टाउ। यस, ई रेज टू माइनस टाउ. देखो यहाँ पे है ई रेज टू माइनस टाउ. फाइन, ई रेज टू माइनस टाउ, ये वाला ई रेज टू माइनस ऑफ टाउ. करेक्ट. व्हाट अबाउट दिस सर? h of t minus tau. What is the value for h of t minus tau? It is 1. It is 1. And then you have to perform integration with reference to tau. What will be the answer for this? What is the answer? E raised to minus of tau. Okay, minus of tau, and minus 1 will come over here. I hope you all agree to this. है ना? Yes or no? सर 1 माइनस ई रेज टू माइनस, अच्छा सॉरी ठीक, लिमिट नहीं लगा। हाँ, लिमिट डालते ना हम लोग. फाइन. नाउ आई नीड टू पुट द लिमिट्स, like t ranging from infinity, like t is ranging from, I'll write over here, t equal to t to t equal to 0. मतलब tau, basically tau होना चाहिए, tau equal to 0 to tau equal to t. Okay, fine. Now you substitute the limit. What will be the answer, sir? So I'll get here as, so if I try to solve this, can you tell me what will be the answer, sir? Substitution of upper limit minus lower limit. What will be the answer? So I'll do one thing, I'll take minus sign outside. ये minus 1 को बाहर ले लेता हूं मैं. ई रेज टू माइनस, So e raised to minus of t, upper limit substitution is done, minus e raised to minus of 0, e raised to 0. This will be my answer. So if I try to solve them, I'll get answer as minus of e raised to minus t minus of 1, and this gives me final answer as 1 minus e raised to minus t. And this will be my y of t. This will be my y of t. Yes sir, understood. कैसे आया मुझे? And this is only for t greater than 0. Because for t less than 0, what is the answer, sir? 0. And for t less than 0, the answer is equal to 0. Convolution sum is over. समझा आपको कि नहीं समझा? समझा सर। It is complicated, no doubt about it. But if you know the procedure, if you know the flow, the things will be easy for you. Okay. अभी चलो ये हमको समझ गया यहाँ तक क्या किया यहाँ पर. अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे सर धीरे धीरे, ताकि थोड़ा और क्लैरिटी समझे हमको कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है. देखिए पहले बुक में कैसे लिखा जाता है, नोटबुक में कैसे लिखना है आपको, ये पेपर में. वी हैव टू
we will see solution. We will denote the given function using normal notation. Let x1 of t equal to h of t equal to u of t. आपको मैंने पहले कहा जो सिंपल है उसको h लेने का, बिकॉज आपको कारनामा करना सिंपल हो जाता है अगर आपका सिग्नल सिंपल है तो ठीक है। तो h को आपने डाल दिया मैंने, x of t minus ut will obtain the result using graphical method. We have the equation as here, so this is the equation. Okay, the equation आपके पास में यहाँ पर है, you have x of t dot star h of t minus plus infinity, आपकी इक्वेशन आपके सामने है यहाँ पे। Now you have x of t equal to e raised to minus t u of t, fine, so that will become what, x of tau e raised to minus tau u of tau, and जो h of t इक्वल टू u ये था इसको भी आपने क्या कर दिया, h of tau इक्वल टू u of tau. You have just merely changed the variables and you have plotted them over here, a and b करके आपने प्लॉट कर दिया. Now this equation you have to perform x of tau h of minus tau folded version, ये जाने दो, ये आपको नहीं समझेगा क्या चल रहा है यहाँ पर. फाइन, ये हम लोगों ने जो किया ना माइनस टाउ किया हम लोगों ने, माइनस टाउ, फाइन, एंड देन यू हैव टू डू व्हाट, माइनस टाउ प्लस टी एंड देन दैट वे for t less than 0, correct, no overlapping, convolution result is 0, and if it is like t greater than 0, then you need to perform that convolution sign, and after convolution you get like this as the result, 1 minus e raised to minus t, ये यहाँ पर आ गया. ओके डन, फाइन. यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आप करके रखिए, जो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था अपने को यहाँ पर, इट इज लिमिट्स ऑफ t, limits of tau, this is tau, kindly make a small correction, this is tau equal to minus influence, because ये भी tau है, ये भी tau है, this all are tau. Okay, this blue color is tau, blue color, done. Okay, now let's move to the second question, example 2. Example 2, perform the following convolution in the time domain wherein both are unit step. इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बोथ आर सिंपल. आप किसी को h बोलो, सिंपल को h लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे h ऑफ t को ये कर दिया, फाइन, x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ, x ऑफ टाउ h ऑफ t u ऑफ t, x ऑफ टाउ h ऑफ टाउ u ऑफ टाउ, फिनिश, डन, फाइन. दिस इज योर x ऑफ टाउ, ओके, दिस इज आवर x ऑफ टाउ, ओके, एंड now we are going to perform for h of t minus tau, ये वाला h of t minus tau. ओके, तो यहां पे आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, फाइन. इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम 0 to t, इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम 0 to t, 0 to t, both are 1. Okay, you perform, so this will become tau, substituting the limits t minus 0, tau for t greater than 0. Okay, if I take t less than 0, then what will happen? If I take t less than 0, there is no overlapping, so I can say the total convolution result is y of t equal to t for t greater than 0. Have you understood the second example? Yes. Yes or no? What about other students? Namita, Rahul? Yes, sir. Any Yes, other sir. student? Amisha? Any query? Pranjal? Pankaj? Okay. Now, coming to this expression. अभी इसमें मुझे बताओ सर कैसे करोगे आप? अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन. टेल मी सर, आप इसमें किसको x लोगे, किसको h लोगे? थर्ड एग्जाम्पल. मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप एग्जांपल्स लिया करो सो दैट वी कैन बिकम इजी फॉर. यस, इट इज राइट, ही इज राइट. मोर एग्जांपल्स, मोर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा. whom you will take x and whom you will take h. कौन है सिंपल? सिंपल कौन सा है सर? U of t minus u 4. of t minus. एग्जैक्टली, तो बिल्कुल सही बोला सर आपने. मैं इसको लेने वाला हूं h और मैं इनको लेने वाला हूं x. बिकॉज अगर मैं इसकी बात करता हूं, u of t minus 4 will look like this. Oh sorry, u of t minus 4 ना, u of t minus, it is delayed version. It will look like this starting from 4, है ना, u of t minus 4 delayed version, and this is your e raised to minus 4t decaying, minus 4t. 4 indicates the rate at which is going to decay. अगर ये 4 है, अगर सपोज आई वांट टू ड्रॉ e raised to minus 10t,
तो -10t ग्राफ जो वैसा आएगा. Decay will be faster. If I want to draw for e raised to minus t, so e raised to minus t will be more sluggish in nature. धीरे 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 ऐसा उतरेगा. Okay, so 4 indicates the 4 is a constant basically. 4 is a multiplication constant, and actually 4 indicates the rate at which the decay is going to happen. Okay, fine. Now, तो आपने बोला इसको x और उसको अपने युवा वाले को अपने h बोला because in considering the simplicity. Fine. तो x2 को अपने ये बोला h of t u of tau minus 4. फाइन, tau minus 4 exactly at plus 4. ए उल्टा ले -4 है तो क्या ले गया +4 एंड +4 यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ करके दिखाया. ओके फाइन, डन. नाउ अभी इसको हम क्या करना पड़ेगा अपने को, tau minus 4 दिस यू हैव डन है ना, tau minus 4. now you have to perform h of t minus tau. How will you do this h of t minus tau? कैसे करोगे इसको, ट्राई करिए सर. How will you do this? Example 1 जैसा था ना अपना, it is same as like our example 1 which we have done over here. The only difference is यहाँ पे जो आपका यूनिट स्टेप था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, वहां पे अभी वो डिले होकर लैग होकर +4 से स्टार्ट हो रहा है. ओनली दैट इज द डिफरेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. कम ऑन नाउ, हाउ विल यू डू दिस? यस सर, एनी आइडिया? Fine, this is the question in front of us. Okay, t minus 4 tha, h of this was u of t minus 4. Okay, now we have to make it as h of t minus of tau. So tau is equal to t minus 4. Understanding or not, sir? Yes, sir. Okay. Come on, I want you to perform this on your own. How will you do this? Same thing, sir. Same thing is happening from 0 to t minus 4. Why t minus 4? Why is t minus 4? Because पहले आपका यहाँ से start हो रहा था. Now it has been delayed to t minus 4. Okay. And then you'll be like going from 0 to t minus 4, x of tau, h of t minus tau, e raised to minus 4 tau. Okay, t minus 4 will be substituting, and this will be your final answer. This will be your final answer. Yes, sir. Understood this one. What about others? Yes, sir. Okay, chalo. ये वाला question. Can you try on your own, sir? Can you try this question on your own? अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है इस पे ध्यान दीजिएगा. दिस वाज द क्वेश्चन वी हैव डन सो फार इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल. अभी एनालिटिकल बात कर रहा है वो, कि अगर क्वेश्चन मुझे एनालिटिकली करना है तो मैं कैसे करूंगा. So for an LTI system, what is the meaning of LTI? LTI stands for, ये बाद में when we start with systems, at that time you will understand in more better way what is the meaning of LTI. LTI stands for, L stands for linear. L stands for linear, and TI stands for time invariant. Time invariant. Time invariant. Okay, kindly make a note of this. L stands for linear and TI stands for time invariant system. When we will study about system, at that time we will understand more better way what is the meaning of linear, time invariant. Okay, no worries about it. But as of now, to understand कि system ऐसे दिया हुआ है LTI system करके with unit impulse response. With unit impulse response. What is the meaning of impulse response? H of t, है ना? H of t हमने यहाँ पे भी देखा था, if you remember. See, we have already seen here. H of t is my impulse response. X of t is any random signal. Okay. H of t is e raised to minus 2t u of t. E raised to minus 2t u of t. The first I will draw e raised to minus 2t u of t for you. How it will look like.
So this is just a skeleton which I'm going to draw, and now I'm going to draw this e raised to minus 2t u of t, matlab only in the first quadrant, it won't be in the second quadrant, one-sided exponential decaying at the rate of 2. Decaying at the rate of 2. Got it? Okay. Next what I want to discuss is this x of t e raised to minus t. Again, this is also same, u of t only, first quadrant. But decay rate is what? 1. It is going to decay at a slower pace. It is going to decay at a slower pace. Understood what it is, sir? Okay, got it. Now we have to do this example using analytical method. I won't be drawing any graphs so as of now. Okay, मैं कोई ग्राफ नहीं दिखाने वाला हूं, हम यहाँ पे इसको एनालिटिकली करेंगे. अल्टीमेटली ग्राफ हमारे बैकग्राउंड में चलता रहेगा कि कैसे होता है, हाउ वेयर विल बी द ओवरलैपिंग विल हैपन, हाँ ओवरलैप रहा तो इसके वैल्यू क्या, उसको मल्टीप्लिकेशन करो, इंटीग्रेशन निकालो, वो हमारा बैकग्राउंड में चलता रहेगा, लेकिन हम ऑन पेपर कोई ग्राफ नहीं बनाने वाले हो. आई विल बी शोइंग प्योरली बाय मींस ऑफ एनालिटिकल मेथड. ओके, तो यहाँ पे मैंने x ऑफ टी लिख दिया e रेज टू माइनस टी u ऑफ टी, h ऑफ टी को मैंने लिख दिया e रेज टू माइनस 2t u ऑफ टी. नाउ changing t by tau. Why need to change t by tau? Because our expression in the form of tau. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा tau e raised to minus tau u of tau, h of tau e raised to minus 2 of tau u of tau. Okay, but what is exactly h of तो क्या लिखा है यहाँ पर, t minus tau. So I'm what will be writing over here, t minus tau e raised to minus 2, and instead of tau I'll be writing what, sir, t minus tau u of t minus tau. Done? Understood, sir? Fine. No graphs are required, so no worries about the graph. कि सर ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ठीक है. If you want to plot the graph, you may use Grapher app, you may use Desmos app in order to plot this graph. But currently, I don't require any graph as such. Now, I want to perform convolution. Convolution का notation, you know, it is star. Fine. Minus infinity plus infinitive e raised to minus t u of tau. Fine. So this is my first signal. This is my first signal. That is what, x of t. First signal is this. Okay. And this is will be my second signal. This is will be my second signal. ये वाला. Okay. Understood what I written over here? Now just read these lines. Like rather going with the graph, what should be the limits? अब मेरे जो limit, because graph क्यों draw करते हैं हम लोग, limits plot करने के लिए. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि देखिए सर यहाँ पे example I have this. Okay, fine. So you can see overlapping is only possible if the t is greater than 0, but till t है ना, तो 0 to t. तो overlapping is only possible between 0 to t. इसलिए आपने क्या लिखा था, 0 to t. तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ? Now I told you I'm not going to draw any graph. How this can be done? Fine. How to do this? Now we know u of tau equal to 1 for t greater than equal to 0. कैसे आया सर ये? कहां से आए? अरे सर u of tau ना, u of tau is equal to 1, u of tau is equal to 1 for tau greater than 0. फाइन, सेम थिंग मैंने पहले कहा था, ग्राफ हमारे माइंड में चलता रहेगा बैकग्राउंड में, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एनालिटिकल लिखने वाला हूं ऐसा. नाउ अभी यहाँ पे क्या लिखा गया है, u of t minus tau. तो u of t minus tau is equal to u of minus tau plus t. ऐसा काय को लिखा सर minus tau plus t? because tau is my variable. tau is अगर सपोज मैं अगर ऐसा आपको लिखता कि भाई u of 2 minus t, और द मीनिंग ऑफ u of 2 minus t, तो ऐसे लिखोगे ना, minus of t plus 2 to get in stand. फिर आप बोलोगे हाँ सर now it is plus 2 minus t बोलोगे, फिर सूत्र मन बोलेगा सर एक काम करते माइनस n को बाहर निकाल दीजिए, t minus 2. तो फर्स्ट आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको मैंने कैसे लिखा, माइनस टाउ प्लस t. फाइन. दिस वैल्यू विल बी आल्सो इक्वल टू 1. फाइन. ये वैल्यू भी 1 कब 1 होगा, जब आपका टाउ ग्रेटर देन 0. बट अभी टाउ नहीं है सर, अभी टाउ नहीं है, अभी क्या है, अभी t माइनस टाउ है. अंडरस्टैंडिंग सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपने बोला u of tau is equal to 1. when it is 1 only when tau is greater than 0. अभी आप बोलते कि u of something is equal to 1 provided that something must be greater than equal to 0. now you have replaced that tau with this expression. और ये कहां से आया सर, लकी नंबर नहीं सर, यहां से आया है. now I'll try to resolve this.
So now I can say, now what I'm going to say here, okay, now t minus tau is greater than equal to 0. Fine. So I can say, write minus tau greater than equal to 0 minus t. Do you agree to this? What I did over here? यहाँ पे plus t था, वहाँ पे t हो गया. ठीक है. मेरे minus tau greater than equal to minus of t. Now, in order to get rid of minus n, what will be doing, sir? You'll be multiplying by minus on both the sides. Whenever you multiply by minus, okay, at that time you have to do one small chotu thing. What? That I will be cancelling and I'll be writing in this form. And then this will become plus, which is same as like this. समझा आपको सर क्या क्या यहाँ पर मैंने? So that is the reason I can say that now my limits of integration. आपने यहाँ पे क्या लिखा था? If you remember, sir, what I have written here, these are the limits for tau. So now my tau will be ranging from lower limit equal to 0. So that I'll be writing. Now my it will be on lower limit 0 to upper limit capital T. Sorry, small t. है ना? Lower limit 0 to t. Lower limit 0 to upper limit t. Understood, sir? What I'm trying to show? Okay. Now, so what I'm trying to say basically is this, sir. Okay, this u of tau, u of t minus tau is just helping me to get the limits of integration. Now my purpose, what is my purpose? My purpose is to get the limit of integration is done. My purpose is achieved. My goal is achieved. Now I don't require unnecessary this u of tau, u of t minus tau. Fine. So this I will not be writing henceforth in my expression. I'll be directly writing what, sir? E raised to minus tau, e raised to minus 2, t minus tau d tau. समझा क्या क्या मैंने यहाँ पे? And limits of integration has now been converted from minus 2 plus infinity to as 0 to t. Understood, sir? What I have done? The rest is Yes, basic sir. algebra. The rest is basic algebra. क्या क्या यहाँ पर सर मैंने basic algebra यहाँ पर if you don't know I'll teach you, sir, no worries. See what I'm going to do here. Okay, that e raised to minus tau dot e raised to minus of 2t multiplication minus 2t minus minus plus dot e raised to e raised to minus 2t minus plus 2t. Now you have e over here. What I can write here, sir? I can write here as e raised to minus of tau dot e raised to minus 2t dot e raised to 2 tau. Yes, done. Okay, sir, but मैं जो डेरिवेटिव मैं जो इंटीग्रेशन जो करने वाला हूं, my integration is with reference to tau, sir. My integral reference to tau. So this is like constant term. This is like constant. Constant comes out of the integration sign. Example, अगर मैं लिखता हूं integration of cx, so c is a constant. C comes outside. That is the reason e raised to minus 2t has come outside. Now what I'm left with, sir? I'm left with e raised to 2 tau and e raised to minus tau. So I can write here as e raised to 2 tau minus tau because base are same, sir. If base are same, then I can do this multiplication is nothing but addition. If it then division becomes what? Subtraction in case of powers. So 2 tau minus tau will become what, sir? 2 tau minus will become e raised to tau. E raised to tau. So you have only e raised to tau inside. And what is the integration of e raised to tau? Same. E raised to tau. E raised to tau. Okay. So now it is 0 to t. So it is e raised to t. E raised to 0 is 1. So you have your e raised to t minus 1 and e raised to minus. This person is coming out at t, okay, 2 tau. Understood, sir, what I've done over here? Is it clear to you? Yes. This is t and this has to be t. This has to be t. This gives the result of convolution. Understood analytical method. Which method you like the most, analytical or graphical? Graphical. Okay, so you may go with any other method, it is your choice. Fine. Now just have a look over here. Compute the following integral. Compute the following integral. You have integration running from minus infinity to plus infinity. 3 plus 2t plus t square multiplied by delta. What is delta? Impulse.
t plus 2 dt, and you have another expression over here like the 2 plus 4 and what xyz. Okay, now how to solve this? First, what is the meaning of delta t plus 2? What is the meaning of delta t plus 2? Delta t plus 2 का मतलब ये होता है कि you will be having impulse function exactly at t equal to minus 2. Yes, do you agree to this? Yes, means this means at only at t equal to minus 2 you have that value. Fine. So now you have to substitute t equal to minus 2, t equal to minus 2 in this expression. So what will be the answer, sir? 3 plus 2 into minus 2 is minus 4 plus 2 2s are 4. So what will be the solution, sir? Have you understood what I'm trying to say, sir? मैंने क्या बोला कि डेल्टा t प्लस 2 क्या होता है? डेल्टा t प्लस 2 का मतलब ये होता है only at exactly t equal to minus of 2 you have the value as 1. You have the value as 1. Now what you have to do? Everywhere at t you have to substitute t equal to minus 2 and then you have to solve the integration. So what will be the answer of this, sir? What will be the answer? So minus plus infinitive, and I'll be writing it, sir, what? I'll be writing here as 3 plus 2 into minus 2, minus 4, plus t ka square, 2 ka square 4, minus ka ye plus 4. What I get? I get integration of 3, running from minus infinity to plus infinity. What will be the answer for this? What will be the answer? Just let's see what is happening, sir. See, same thing. Okay, 3 into ना भी मुझे क्या मिला यहाँ पे? Delta of 0. Fine, delta of 0. If I substitute delta as t minus 2, delta t में substitute किया ना अपने यहाँ पे as minus 2. So 2 minus 2 is 0. What is delta of 0? What is the integration of delta of 0? What is the integration of delta of 0? Understand this. What is basically integration? So integration is what? Integration is area under a curve. So what is the value available? 1 over there. It is 1. So I can say it is 3 into 1 equal to 3. Integration of delta is 1. Why? Because it is area under a curve and the value is 1 over there. That simply write 1, 3 ones are 3. Done. Understood? Yes, understood. Okay. On the same lines, can you try second question on your own fast? On the same lines, try with the second question. ये सब गेट क्वेश्चन है. गेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रल्स वाले. जिसको नहीं पता है वो डर जाता है, कह रहे यार क्या है, किस टाइप का इंटीग्रेशन है, तो कभी सीआरजी सर ने, मेघना मैडम ने, नीता मैडम ने सिखाया. बोली क्या है, हाउ टू डू दिस, क्या करोगे सर, हाउ विल यू डू दिस? यस प्रंजल, हाउ टू डू दिस? क्या है यहाँ पर? t minus 1. So you have to substitute t equal to 1. What is over here? T plus 4. So you have to substitute t equal to minus 4. Fine. क्या आंसर है यहाँ पे इसका? नमिता, what answer you got? What answer you will be getting here? 2 plus 1, 3. Yes. 3. यहाँ पे क्या आएगा आपको? 16. Now you take the integration. Take the integration of this. Do this. What will be the answer? What will be the answer, sir? So this 3 will come outside. Fine. अंदर क्या बचेगा? डेल्टा 0 बचेगा अंदर. Yes or no? Because ये तो 3 हो गया, 3 तो बाहर आ गया. 1 minus 1 is 0. डेल्टा 0 बच गया अंदर. और ये लिमिट्स -2 plus 4. ठीक है. फाइन. पहले इसकी बात करते हैं आप लोग. फर्स्ट इंटीग्रल, देन विल टॉक अबाउट सेकंड इंटीग्रल. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? सो 3 into this bracket. What is the answer of bracket, sir? What is the integration of delta 0? You will say the answer is 1. अभी 1 आ गया तो खत्म हो गई यहाँ पे स्टोरी. बिकॉज आप लिमिट कब सब्स्टिट्यूट करते हो? जब वहां पे t देखने को मिलता है. जब t होता है तब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो ना, 4 and -2. बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं t वगैरह, डायरेक्टली 1 आ गया वहां पर. तो 3 into 1. What about second case, sir? What about second case? 16 बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा सर? इंटीग्रेशन और रनिंग फ्रॉम 1 to -1.
1 to -1 to 1 of delta of 0. Why 0? Because t equal to -4 -4 0, delta 0. तो 16 यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 multiply by 1. 16 plus 3 is what? 19. 19 is the answer. सर Want to वो vary? 1 to -1 जा रहा है तो 2 तक होगा ना वो, ये मतलब देखो, मल्टीप्लाई एक बाय सेकंड ना बेटा, एक सेकंड. See, have you understood this? See, the second integration exists only at t equal to -4. Putting t equal to 1 in the first integration and t equal to -1 integration, we get this like this. 3 will come outside, delta 0 बचेगा अंदर, यहाँ पे delta 0 बचेगा, and 3 into 1 plus 16 into 1, the answer is 3 plus 16 equal to 19. Done. Yes, Shrutiman, what were you asking? हाँ सर, वो जो इम्पल्स है वो ओनली एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अवेलेबल है ना, हाँ, तो मतलब उसका तो एरिया अंडर कर्व 0 आना चाहिए. good. Actually, mistake मेरा है. I agree to this. This is my mistake because as time was little bit less, तो मैंने आपको फटक से वो बता दे कि भाई देखो ये जो है वो t equal to 0, value is 1 for t otherwise the value is 0. ये मैंने बताया था आपको, if you remember, है ना? I have taught you this, but ऐसा नहीं है. This is not the way to understand delta function. Delta function actual में क्या होता है? Delta function is actually what? If you read 11th physics 1 chapter 1 measurements, if you read 11th physics 1 chapter 4 force, वहां से impulse का मतलब समझता है. What is impulse? Sir, impulse is a force of very high magnitude for a short amount of time. Do you agree to this? ये यहां पे लिखा हुआ है. यस सर. ओके, अभी आप सुनिए स्टोरी सर. मैं यहाँ पे बोलता हूं कि ये है मेरे पास में एक इंपल्स फंक्शन. बोले सर कुछ भी बनाते हो. अरे सुनिए ना सर, ये है 0, कंसीडर दिस एज a and consider this as b. What is a, sir? I will say the width is a now. Width is a. Obviously, a minus 0 is width. Ending point minus starting point. What about the height? Height is b. Now you tell me, I want to make width that is w tending to 0. क्या होगा उससे? तो सर अगर विड्थ को अगर आप कम कर दोगे, एंड इफ यू वांट दैट एरिया अंडर अ कर्व इक्वल टू 1, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू? A tends to 0, B tends to infinity. फैंटास्टिक, खत्म हो गया सर. Therefore, obviously, B will tend to infinity. इसीलिए सर आप A को छोटू छोटू कर करके यहां तक लेकर आते हो और B को लेकर जाते हो ऊपर आसमान में इंफिनिटी बोलकर. एंड हेंस एरिया अंडर अ कर्व मतलब इंफिनिटिव मल्टीप्लाइड बाय 0. अगर मैं करता हूं एग्जांपल लाइक फाइन, लाइक इंफिनिटी इनटू 1 बाय इंफिनिटी, which is actually again wrong to say because infinity का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, and this comes out to be as 1 area under a curve. Understood? And that is the main definition of a delta function. तो डेल्टा फंक्शन क्या हमेशा एरिया अंडर, इसलिए हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि डेल्टा फंक्शन इज एक्चुअली एरिया अंडर अ कर्व and the value is 1 and that value is only existing at t equal to 0 and it is 0 otherwise. Because there is no width है ही नहीं, वो वहां पर है, वहां पर उसकी वैल्यू इंफिनिटी है ऐसा, और यहाँ पे है ही नहीं वैल्यू वो. गॉट इट? वेरी गुड बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. डाउट क्लियर हो गया अपना. मैंने पहले बोला था, इफ यू आस्क क्वेश्चंस टू मी आई विल सॉल्व योर डाउट्स. इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चंस टू मी आई विल अज्यूम यू नो द थिंग्स एंड आई विल मूव फॉरवर्ड. So this completes with the convolution. Thank you very much. Video will be uploaded today itself. Thank you, sir. Thank you, sir.